Hello everyone. Today we are again with a new video, and in this video we are going to study about the capacitance of a parallel plate capacitor. See, this parallel plate capacitor, in the last video I have gave you that why we need capacitor, what is a capacity and what is the capacitance. So एक छोटा सा हम रिकैप करते हैं जो हमारे लास्ट वीडियो में था। वो ये था कि कैपेसिटर जो है वो क्या होता है, वन हु स्टोर द चार्जेस, जो मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करे। और हमारी कैपेसिटी का जो फॉर्मूला आया था वो क्या था, Q बाय V था, जिसे हमने बताया था कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराड होती है, एंड चार्जेस अपॉन दी वोल्टेज और PD अप्लाइड। सी दीज आर द टू मेटेलिक प्लेट्स। ये मेटेलिक प्लेट पे मैंने एक लिया है पॉजिटिव प्लेट। ये भी मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि जो प्लेट्स होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है और इनर प्लेट जो बी की है वो नेगेटिवली चार्ज होगी, आउटर प्लेट अर्थ होगी। तो आप उसको गो थ्रू करें, एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि कैपेसिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक। नाउ लेट अस सी दैट व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस combination. Okay, so if I want to start, see, nothing in this derivation you have to do, everything you have to just we know that means you have to recap your last topic whatever you have studied. Like the first thing which I will say that E is equal to dV by dr. Do you know this? What is it? Is a potential gradient, मतलब change in potential with respect to distance. तो अगर मैं with respect to distance जो change आ रहा है उसे potential gradient कह रही हूँ, तो इसकी मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलती हूँ कि E है और V हमारा PD है, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है, इट इज D. So can I write कि इलेक्ट्रिक फील्ड D is V by D? So this is my one basic formula which I will use from the potential gradient, saying that potential with respect to distance between the plates are changing, and because of that you are having E is its electric field. Now again we know that what is capacitance, it is Q by V. Charges so we are giving to the capacitor, no problem, but I want how much PD will change, means what will be the potential. For that I will do my starting of derivation from E is equal to V by D. So from here what is V? From equation 1, V is nothing but ED. E is the electric field between the plates of capacitor. Again I will say you just go back, recap your chapter where you have done Gauss theorem, और Gauss theorem ने आपको parallel plate capacitor की बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड के आगे, प्लेट के आगे और प्लेट के पीछे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला दिया है। अगर आप उसको फिर से रिकैप करेंगे तो आपको पता होगा कि हमने जो पहली इक्वेशन यूज करनी है, अगर वो E is equal to V by D है तो V is equal to ED है, और E जो है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. This we already know using Gauss theorem. इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि चैप्टर का जो एंड है वो बिगिनिंग को पूरा कवर करता है. सो गो थ्रू द चैप्टर. E जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, जहाँ सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, एंड सिग्मा इज नथिंग बट Q by A because I have taken the area of plate is A. अब आपके पास सिग्मा है तो हम वैल्यू पुट अप कर सकते हैं Q by A epsilon naught. देखिए ये we know that था, ये भी we know that, nothing you have done something very different. Already I have taken the topic or formula from the last topics. So E में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, V में E की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं. I will put this value here and what I will get now E. What I will get now V. V is Q by A epsilon naught into D. I have to find but capacitance which is Q by V. So I will substitute now V here. So I will get the capacitance and C is equal to Q by Q whole divided by A epsilon naught D. Q आपका कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म ऊपर जाएगा. So what will be now capacitance? It is A epsilon naught by D, the capacitance of the parallel plate capacitor. If you are going through the video, I will ask you just to write the equation in your copy so that the concept will be clear to you.
Consideration in physics, always try to write in your own words. Two parallel plate capacitor having plus sigma and minus sigma, the surface charge density, AB the area of the plate. Due to induction, the plate A, which is positively charged, will give the negative charge on the inner plate. Outer side is earth. Let the distance between plate is considered to be D. Try to write in your own words. हमारी स्टार्टिंग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से होगी, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से आया है V by D. यहाँ से हमने V निकाला है और इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी जानते हैं गॉस थ्योरम से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. Where sigma is the surface charge density, so I have substituted the value and got the value of potential. Hereby the capacitance A epsilon naught by D. Thank you everyone.